Today we go for explain about the evidences of evolution. Evidences of evolution. आमे इवोल्यूशन रो डिफरेंट थ्योरी विषय स्टडी कले एबे एविडेंस देखिबा किछि तथ्य रही जो गुड़े कि भाव इवोल्यूशन होइछि ऑर्गेनिज्म माने किभଳି भाव इवोल्यूटेड होइछन्ति ताको एक्सप्लेन करूछि आमे फास्ट कंपैरेटिव एनाटॉमी देखिबा किछि कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल फीचर को कंपेयर करिबा देखिबा कॉमन एंसेस्टरी विषय रे एंड को रिलेटेड ऑर्गेनिज्म मानक विषय रे सो फर्स्ट एविडेंस इज to explain the comparative anatomy of explaining the comparative anatomy of evidences. Comparative anatomy of evidence. What do you mean by comparative anatomy? Study of comparative anatomy among animals provide much evidence in the favor of evolution So, to explain the comparative anatomy, we have to go for the study on homologous organs. When we study about the homologous organ, then we can easily understood about the comparative study of evidences of evolution. Homologous organ. Homo means same but similar. Logos means study and organ that means आमे किछि समान organ विषय रे पढ़िबा जो गुडे कि different organism मानक पाखरे रहिछि that is it is the organs which have similar in structure, origin and structure, but different in function. किछि ऑर्गन रही जो मानकर आमे ओरिजिन देखिबा समान रही सिमिलर इन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर भी समान रही ओरिजिन भी समान रही बट डिफरेंट इन फंक्शन ताकू एक्सप्लेन करिबा पई आमे नबा फोर लिम्ब ऑफ बर्ड that is wing of bird, then forelimb of horse, then forelimb of man,
forelimb of bat, forelimb of whale. forelimb of whale. So आमे जदि forelimb of bird को देखिबा, that is wing को, forelimb of horse को देखिबा, man, bat and whale. So forelimb contains bones like humerus, that is called upper arm, radius ulna, that is called hand, carpels, metacarpals, phalanges. Carpels is the wrist bone, metacarpals is the palm bone and phalanges are finger bone. Wrist bone, palm bone and phalanges are finger or digit ताको कहया, finger or digit bones. So जदि आमे birds रो फोरलिम्ब को देखिबा, तार विंग को देखिबा, ता धरे आमे ह्यूमरस भी पाइबा, रेडियस उल्ना पाइबा, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स, फालांजिस पाइबा. देन हॉर्स रो भी देखिले सेम पाइबा, ह्यूमन रो भी सेम पाइबा, बैट रो भी सेम पाइबा, व्हेल रो भी सेम पाइबा. बाकी डिफरेंस कोन टिके आसियो ता मित्र साइज रे. कहार रेडियस टिके बड़ रही, रेडियस उल्ना टिके बड़ रही, कार अपर आर्म टिके बड़ रही, कार रिस्ट बोन साइज रे छोट रही, कार मेटाकार्पेल्स छोट रही, कार फालांजिस टिके बड़ रही, कार छोट रही. दीज आर द डिफरेंस पाइबा, किंतु नंबर ऑफ बोन्स आर सेम, नेम ऑफ द बोन्स आर सेम, बट दे हैव डिफरेंट इन फंक्शन. आमे पढ़िले होमोलोगस ऑर्गन कहूची सिमिलर इन ओरिजिन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन. ताले देखिबा एटी forelimb of a bird is modified into wing. This is modified into wing. So wing is meant for flying. Wing टा कोन पाई रही छे ना flying पाई. Horse रो forelimb कोन पाई adapted है छे fast running पाई. Man रो forelimb to hold something. Bat for flying, whale for swimming. So this is all about the homologous organs. एबे हमें सेकेंड पोस्टुलेट पाखो को जिबा, दैट इज एनालोगस ऑर्गन्स. एनालोगस ऑर्गन कहले एटा संपूर्ण रूपे ऑपोजिट ऑफ होमोलोगस ऑर्गन. होमोलोगस ऑर्गन रो ऑपोजिट फॉर्म रे हमें देखिबा एनालोगस ऑर्गन्स. सो तार डेफिनेशन हमें लिखिबा, द ऑर्गन्स which has similar in function but different in origin and structure. The organs which has similar in function but different in origin and structure. एठी हमें एग्जांपल रे देखिबा, wing of bat, wing of bird,
wing of dragonfly or butterfly. Dragonfly or butterfly or mosquito. So आमे जदि देखिबा तांकर स्ट्रक्चर को एठी कोन कहूची फंक्शन होची सेम. Here is function is here function is flying. Function is flying but different in origin and structure. When we analyze the wing of bat, bat is a mammal, and wing of bird, bird is a glorified reptile or bird. Tar wing is its bird's wing is fully developed, fully modified for aviation mode of life. Bat is also aerial in nature. Wing of dragonflies. Dragonfly जदि आमे dragonfly रो जो wing रही it's also adapted for flying. किंतु आमे जदि तार internal structure को देखिबा एथिरे जो आमे skeletal system देखिले that type of skeleton system is quite absent in case of dragonflies, butterflies and mosquitoes. So it clearly indicates that these are the wing of the bat, wing of the bird quite different from the wing of the butterfly, dragonfly or mosquitoes. So they are different function, different origin, different in structure, but they have a similar function. Both are involved in flying. That is called analogous organ.